हेलो। और हमने कल एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट? Isn't it? यस। We have talked about atmosphere layers, right? So we'll continue with that. So I hope that you can see my screen. Every one of you can see my screen. यस यस यस। Yes, sir. Yes, sir. So when we talk about atmospheric layers, these are the basic layers, okay? Like as you go inside the Earth's surface, you will get the different layers of the different layers, right? The same way when you go at height, these are the different layers, okay? Like troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere, okay? So what will happen? There is a variation in the temperature. See, as you go at height, first what will happen? Like from the surface, if you see, temperature is decreasing. Then 10 to 20 kilometers is constant. Then from 20 to 50, almost it is increasing. It is going up to 0 degree. Then again, 50 to something like 54 or 53, it is constant. Then again, the graph is going backside. So temperature is going almost up to minus 180. And at the 90 kilometer, you can see my temperature is how much? Minus 120. Then again, it starts to increase. Okay, it's gone to minus 80. Then you can see in the thermosphere what is happening. The temperature reaches to almost 60 degrees centigrade, right? Isn't it? So this is how the temperature varies in the different layers. So you can see first decreasing, then constant, then increasing, again constant, then decreasing, then what again decreasing, and then increasing, and then there's a like heavy variation in the variation in temperature. Okay. Now here some the limit you can see ozone maximum. So you know up to like I told you the thickness of the ozone layer is almost 20 to 30 kilometer, right? And ozone layer starts from 10 kilometers. Okay, and your most of the aircraft actually fly in this region, tropopause region. You can see tropopause, and you can see the stratopause and mesopause, right? What is that? Can anybody say by looking at the diagram? Stratosphere is okay, troposphere is okay, mesosphere is okay, thermosphere is okay. But what is that word called tropopause, stratopause, and mesopause? What is that? Anyone? Any idea? Anyone? What, sir? आप यहाँ Hello? पिक्चर में देख पा रहे होंगे ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर लिखा Yes. हुआ है, मेसोस्फेयर लिखा हुआ है, थर्मोस्फेयर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, देखिए लाइन बनाई है ना, डॉटेड लाइन। देयर दे हैव रिटन Yes. ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, mesopause. So what is that actually? Just look at the diagram and tell me what is that. Sir, Any between idea? lines of two. Anyone? सर। Yes. Yes, Amrit. सर, इस लाइन का मीन ये हो सकता है कि इतने मतलब इस लाइन से अगर हम ऊपर जाएंगे तो मतलब जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो दूसरे आ जाएगी, चेंज हो जाएगी मतलब। Can you repeat once again, Amrit? Actually, your voice is too low. सर, इस लाइन का मतलब ये हो सकता है कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो इतनी लाइन के बाद से दूसरा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए ट्रोपोस्फेयर दे रखा है और ट्रोपोस्फेयर के बाद एक लाइन है, तो उसका मतलब है कि उसके बाद हम स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर हो जाएंगे। Very good. Very good. Good observation. तो एक्चुअली ट्रोपोस पॉज क्या है? एक बॉर्डर है, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन। ट्रोपोपॉज इज अ बॉर्डर लाइन which indicates that your troposphere is going to over and which is going to start, stratosphere is going to start. Similar for stratopause. Stratopause, see what do you mean by pause? See, when you play a video you put a stop, right? Pause, right? Pause means stopping it, उसको रोकना, right? So that is what tropopause means, troposphere over हो गया। वैसे ही stratopause means stratosphere over हो गया। And the same way mesopause. So mesopause is what? It is a boundary, or you can say a line, which is separating thermosphere and mesosphere. Is it clear, guys? Everyone? यस Clear, सर। sir. Okay, perfect.
now. So this thing is clear, like first from the earth surface. From the earth surface, we go to the, like, up to 10 kilometer. My temperature decreasing or increasing? What will happen to my temperature, guys? So please repeat your Sir, question. Sir, it will decrease. decrease. Yes, Decrease, guys, sir. tell me, what will happen to Decrease. temperature? Decrease, sir. Sir, it will decrease. It will. Decrease. Okay. Decrease. It is decreasing, and it will. What is the what is the temperature? It is go like minimum, like at 10 kilometer. What is the temperature? Look at the graph. Sir, See here. minus 78, minus I'm 79. just marking with this blue color. Lot. Okay, let me mark with pink color. I'm marking with pink color. Can you see the pink color line? Yes, sir. So what is the temperature? It is almost. See, there are two things written. Minus 78. Minus 60 and minus 80. What is minus 60? What is minus 80? Why two times it is written? Anyone? So here you see that here degree centigrade and the below value is in degree हम टेम्परेचर Fahrenheit. को Okay. So generally we take temperature in degree centigrade. So what is the temperature when it is 10 kilometer? Almost minus 60, right? Isn't it? Or in Yes, sir. Fahrenheit it is minus 80 approx. So let's take in centigrade. So 10 kilometer minus 60. Then what is happening up to 20 kilometer? Temperature is what? See, up to 20 kilometers, you'll get a straight line. So it is same only. Are you getting? So Yes, 10 sir. to Yes, 20 sir. kilometer temperature is constant. Same. See, it is constant only. It is not going to change. Then from 20 kilometer, what is happening? Temperature is increasing or decreasing, guys? Increasing, sir. And what is the peak point? 50 kilometer almost. How much is the temperature? 50 kilometer. Almost 0 degree, right? Yes, sir. So 20 to 50 temperature is increasing, and at the 50 almost 50 kilometer, what is happening? My temperature is going to 0. So what happened? Now here again, after 50 kilometer to 54, what is happening? It is same, isn't it? Yes or no? yes. Then what is happening at the orange color point? I hope that you can see that. So from orange point, it is almost 54 kilometer, and it is going back. It is going back. Back. Stop my video. It's not good. And actually, guys, I'm in traveling. Okay. So here it is going. And what is the peak point, guys? It's almost 85 kilometer. And what is the temperature? When you see it, let me draw a line. What is the temperature? So Look at that. almost 85, minus 85. Minus 35, not 85, right? Oh, yeah. Minus 85 proc. Then what is happening? Again, temperature is going back. You can see that it's decreasing. Almost when it reaches to 90, it is how much? Almost 90 degrees. Minus 90, right? Isn't it? Look at Yes, this sir. green color line. Just look at this green color. Can you see the green color line? Yes. So when Yes. it is reached 90 kilometer, what is the temperature? Almost it is in between of minus 80 and minus 100. So it is the half of it, means minus 90 degrees. Minus 90. Minus 90 degrees centigrade. So when you are at almost 90 kilometer, your temperature is minus 90 degrees centigrade, right? Then what is happening after that? After that, what is happening? Temperature is increasing. Increasing. Now it is reaches to the 100 kilometer. Now what happened temperature? See that? What is the temperature? Minus 80 degree. So again, it has increases or decreases? Increase. Increase. Now see that temperature is increasing, right? Now it is increasing. Like here it was like this. The somewhat graph has come down, and then it has gone straight. So when it is reaches to which kilometer? You see that? What is the kilometer? One, Almost 100. 115 kilometer, right? Yes. 100. What is the temperature? Sir, Look at the yellow color line. Fahrenheit. No, 60 degrees centigrade. Almost 65 degrees centigrade, right? Yeah, yes, sir. Yes, sir.
No, it's almost 70 because we are taking 2 gap. In graph, it is 20 gap. It is almost 70 degrees centigrade, right? So you can see that how the temperature is getting varied. So what is happening? First, temperature is decreasing. Then what happened? Constant, then increase, then constant, then decrease, decrease, increase, increase, increase. Are you getting? Sir, Yes. sir, why sometime temperature decrease and suddenly increase, decrease? It is That is not. because of the atmosphere, how the atmosphere is. Okay. Sir, the There, space temperature is in minus or it is hot in or minus cold? also, plus also, minus also, too high also, too low also. Okay. This is what I am talking. This is space only. Troposphere, strato, these all are, we are talking about a space only. Okay. This is space, sir. Yes. Okay. And why these temperatures are varying? So the one main reason you can say the molecules, the different kinds of gases. Okay. One reason can be Yes, sir. the different kind of gases and the things present in the atmosphere in that particular region. Is it clear? And remaining, you can also search it. What could be the reason why temperature is getting varied? See, the thing is, there's a relation between height and temperature. Okay, in the like astronomy and you can say aerospace, there is a relation. As height, like there is something related to lapse rate. As the height changes, temperature also changes. Pressure also even changes. So that is the thing. Is it clear, guys? This Yes, graph sir. is clear. Yes, sir. Okay. Shall I go to next? Okay. Perfect. So let me go for next slide. Okay. So we have done with the atmosphere layers. Okay. So you got the basic idea, right? That Yes. when our height changes, temperature changes. Similar way, Okay, tell me when temperature is higher, what about pressure? Pressure will be lower or higher? Tell me. Sir, higher. Higher. How? Can you give me an example? Sir, सर Yes. सर उसमें हवा का दबाव पड़ेगा। जैसे कि Yes. एग्जांपल के लिए हम एक प्लेन को ले सकते हैं सर। उस प्लेन के जो विंडोज होते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स करे जाते हैं ताकि उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्लेन एक टाइम के बाद वो ब्लास्ट हो सकता है स्काई में। ओके। थैंक आई यू। डोंट नो आप लोगों ने कितनों ने पढ़ा होगा, एक रिलेशन होता है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, P इक्वल टू रो आर टी। हमने, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है? नो सर। प्रेशर इक्वल टू रो आर टी। no, प्रेशर, sir. प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसके थ्रू, प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई विद आर, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज काइंड ऑफ कांस्टेंट, इनटू टेम्परेचर। तो अगर मैं बोलता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Sir, डायरेक्टली directly. प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। Sir, वैसे directly. इनवर्सली का मतलब क्या है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें, प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी, तो क्या बोलेंगे आप? प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे Yes. 9th क्लास, सम ऑफ माइट मे बी 10th। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में। Sir, यस। sir, what we read, pressure is equal to force upon area. That सी, प्रेशर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। वन फॉर्मूला इज फोर्स बाय एरिया, अनदर प्रेशर फॉर्मूला इन केमिस्ट्री यू विल स्टडी अबाउट डेंसिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर। ठीक है, एक Yes, चीज के sir. बहुत फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, Yes. जैसे मॉर्निंग की क्लास में भी मैंने आपको बताया, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके अलावा मैंने Yes. बताया एरिया इंटू लेंथ, राइट? उससे भी Yes, वॉल्यूम sir. आ जाएगा। So the same quantity can be having many formulas. It is not necessary you have only one formula, right? Is it clear, Yes, guys? sir.
तो इसी क्लियर तरह आप सर। प्रेशर का भी निकाल सकते हो। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये क्या है आपका, टेम्परेचर के लिए, आप प्रेशर के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एटमॉस्फेयर के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं check wall or this. Who all are present? So we have, okay. So next, now we are going to talk about, we have talked about atmospheric layers. Now we'll talk about payload telemetry format. What we'll talk about, guys? Payload. Can anybody say what do you mean by telemetry? मैंने ये डिस्कस किया था आपको अगर याद होगा, जो सैटेलाइट का सिस्टम और सब सिस्टम होता है उसमें। Anybody who can answer what is telemetry? Anyone? What do you mean by telemetry? Anyone? टेली कमांड, टेलीमेट्री मैंने बताया था आपको सब सिस्टम में, अगर याद होगा आप, जब मैं आपको पढ़ा रहा था आपका स्ट्रक्चर और एडीसीएस, एटीट्यूड डिटरमिनेशन कंट्रोल सिस्टम, और उसके साथ में मैं आपको बताया था टेलीमेट्री, टेली कमांड। उसके बाद क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है, फिर उसमें आपके पावर मॉड्यूल होता है, राइट, अगर आपको याद आ रहा होगा। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय टेलीमेट्री? एनी आइडिया गाइस? Sir, I have idea. Data collect data. यस, Sir, I have something. Remember, collect data. नो, ओके, लेट मी टेल यू। तो यस अमृत, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर जब हम मतलब अपने अर्थ से सैटेलाइट्स को सिग्नल भेजते हैं और वो सैटेलाइट वर्क करता है तो वो टेलीमेट्री कहलाता है। राइट। तो टेलीमेट्री क्या होता है बच्चों लोग, मतलब कि आपके जो सैटेलाइट होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है ना, 36,000 किलोमीटर। अगर आप हायर ऑर्बिट की बात करें, जैसे कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। तो जब आप काफी हाइट पर होते हैं, जैसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, आईएसएस की, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है धरती से, इतना काफी ऊंचाई पे, 400 किलोमीटर कम नहीं होता। तो वहां से आपका जो डेटा मिल रहा है आपको, फोटो कैप्चर हो रही है। आपने देखा होगा जब कभी किसी जगह पे बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो आपको न्यूज चैनल में फोटो कैप्चर, सैटेलाइट की फोटो कैप्चर दिखाता है, राइट, कलरफुल पिक्चर रहती है। तो वो सारी कैसे होती है, तो वो धरती पर कैसे आती है, सैटेलाइट कैप्चर कर रही है वहां से ना, तो उसको टेलीमेट्री के थ्रू लाया जाता है। तो टेलीमेट्री आपका एक तरह से माध्यम है, एक कम्युनिकेशन है, जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, वट एवर द इंफॉर्मेशन satellite have gathered, that is going to transfer to the ground with the help of telemetry. And that is what here the thing is given, payload telemetry format. Okay, so telemetry and telecommand is just a you can say a platform or a method or a way through which all your data, whatever is stored by the satellite, is going to transfer to the ground with the help of telemetry. So telemetry is nothing but is a communication way, सैटेलाइट टू द ग्राउंड स्टेशन और ग्राउंड स्टेशन टू द सैटेलाइट। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से देखिए आपका डेटा आता है। जब आपको जो डेटा मिलेगा ना सैटेलाइट से, वो इस फॉर्म में एक्चुअली मिलता है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है मिशन नेम, मिशन नेम में क्या लिखा है, DSR SLV 2026। ये एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा हुआ है मिशन नेम, ये हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है, रॉकेट एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग को भी, जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको इस मिशन में काम करने का मौका मिलेगा हमारे साथ। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है DSR SLV, ठीक है। मिशन टाइम, मतलब कि टाइम क्या है, डेट क्या है, किस टाइम पे लॉन्च करेंगे। जैसे आपने जो नासा और इसरो के लॉन्च देखे होंगे, उसमें टाइमिंग चलती रहती है ना, उल्टी गिनती यस सर। चलती है। तो द यस सर। सेम वे, देन एल्टीट्यूड, हाइट, कितनी हाइट है। जैसे मान लिया आपने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, रॉकेट लॉन्च किया, तो वो टाइम मतलब एवरी सेकंड में उसका हाइट क्या होगा, हाइट चेंज होगा ना, रॉकेट फायर करेंगे तो व्हाट इज द एल्टीट्यूड, व्हाट इज द प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज,
जीपीएस टाइम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक पार्टिकुलर टाइम पे मतलब कि हम पूछे इस मतलब रॉकेट जब यहाँ पे पहुंचा तो क्या टाइम हुआ था, राइट। तो दैट इज व्हाट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, तीन चीजें होती हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, वर्टिकल हाइट होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट, ऊंचा ग्राउंड से, धरती से अगर आप 90 डिग्री पे जो हाइट पे जाएंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, वो आपका एल्टीट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, अब जैसे लॉन्गिट्यूड अगर आप बात करें, ये आपका मतलब कि आपका इक्वेटर होता है, और मैंने बताया था मेरिडियन होता है, आपको अगर पता होगा अर्थ को दो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक तो वर्टिकली डिवाइड करते हैं उसे हम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, दूसरा क्या होता है हॉरिजेंटल जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो अगर आपकी सैटेलाइट की लोकेशन, your location, the location of the satellite from the equator, how much angle from the equator satellite is making, that is called actually uh, you call as latitude, okay. It's a longitude. And from the meridian, vertical line which divides your earth into two equal parts, eastern part and western part. So how much angle satellite is making from that vertical line, that is called latitude. So we have like angle from the equator, okay, an angle from the vertical line, that is what meridian line, and then how much height from the ground. If we know these three things, we can find out the location of the particular object like satellite. So that is how your GPS works. GPS, what GPS do, GPS tracks three things, longitude, latitude and altitude. सभी को क्लियर है? एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टिकल हाइट होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और आपका जो लैटिट्यूड होता है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है जो आपका ऑब्जेक्ट है मतलब मेरिडियन से, ठीक है। और हॉरिजेंटल मतलब इक्वेटर से कितने का एंगल बना रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। तो ये तीन चीजें से हम पता करते हैं हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है, ना कि सैटेलाइट। इवन हम कभी जैसे मान लीजिए आपने ओला बुक किया या कोई चीज बुक किया तो आपके पास आ जाती है, तो आप ट्रैक कर पाते हो ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस टाइप, राइट, गूगल मैप से। तो एक्चुअली गूगल मैप जो आपका है और जो ट्रैकिंग होती है ना, वो इन तीन चीज पे ही काम करती है, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। उसके बाद जीपीएस सेट्स, ओके, तो ये आपका क्या है, सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए, मतलब कितनी सैटेलाइट ऑर्बिट में है, सेम ऑर्बिट में, ठीक है, तो वो सब ट्रैक करने के लिए। टिल्ट एक्स वाई जेड, आप देख पा रहे होंगे टिल्ट एक्स वाई जेड है यहाँ पे। तो एक्स मतलब कि जब सैटेलाइट मान लीजिए आपकी डिफ्लेक्ट हो गई, एक्स तीन एक्सिस होते हैं ना हमारे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो अपने अक्ष से कितना टिल्ट हो गई है, मतलब एक्स अक्ष से कितना घूम गई है या कितना एंगल घूम गई है, तो वो आप क्या बोलेंगे, टिल्ट एक्स। तो एंगल मेजर करेगा, जो एक्चुअली जाइरोस्कोप करता है, मैंने आपको बताया था, ऑर्बिट कंट्रोल, राइट, एटीट्यूड ऑर्बिट कंट्रोल, राइट। तो एक्स एक्सिस से कितना झुक गया है, वाई से कितना झुका है, जेड से कितना झुका है। तो हमारे सेंसर्स होते हैं, जैसे जाइरोस्कोप हमारा सेंसर होता है, वो एक्चुअली यही बताता है कितना झुक गया है एक्स से, वाई से, जेड से, तो उसको वापस हम उसी पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर स्टेट मतलब कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, ये सब पूरा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा एक्टिवेट है कि नहीं है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तो सारा डेटा हमको नहीं मिलेगा, राइट, विल नॉट गेट एनी डेटा। एंड कैमरा स्टेट, इफ सैटेलाइट हैविंग अ कैमरा, इफ द सैटेलाइट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, और वी आर गेटिंग द like proper, like we are able to capture the image and at all. So for that it will say power state of the camera, means it is on or off, like that. So this is how the telemet format will be like. When you launch the satellite, on the ground there will be a big screen. On that big screen your data, these are the data, and backside of that these kind of things will be mentioned, okay. So this is one kind of telemetry format, okay. Okay, let me go to the next. Now see, this format is actually called ASCII format, American Standard Code for Information Interchange. What is that format? ASCII, American Standard Code for Information Technology. So ऐसे करके होता है, the telemetry data shall be transmitted with ASCII ASCII code, where comma will be used for every data. Like suppose you can see here mission name, तो ये आपका टैग्स बोलते हैं, ये जो एरो यूज किया ना, लेस देन ग्रेटर देन, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा उसमें इन एरोस को हम टैग्स बोलते हैं। तो टैग के अंदर हम लिखते हैं अपना डेटा, लाइक टैग के अंदर पहला डेटा क्या है हमारा, मिशन नेम, DSR SLV 2026,
उसके बाद अगला डेटा क्या है हमारा, मिशन टाइम, तो हम कॉमा लगाएंगे मिशन टाइम, फिर कॉमा लगा के अगला डेटा क्या है हमारा, Excuse me, एल्टीट्यूड, sir. कॉमा प्रेशर। यस Hello. Nishant sir, all coding in HTML and CSS. यस मैम। All coding in HTML and CSS. एक्चुअली मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी, कैन यू रिपीट वंस अगेन? सर जो आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग बता रहे हैं HTML and CSS में. हाँ हाँ यस मैम। ओके. एक्चुअली मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये जो टैग्स आपने यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइट, ये इसको टैग बोलते हैं राइट, यस और नो गाइस? ये जो हम लेस देन और ग्रेटर देन का एरो यूज किया है, जिसे हम यूज करते हैं एचटीएमएल में, ठीक है ना, तो इसको हम टैग्स बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, टैक्स। टैग्स। टैग। तो यहाँ पे ये एरोस, जैसे मैथ्स में हम लेस देन ग्रेटर देन बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में इसको लेस देन ग्रेटर देन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको बच्चे लोग, टैग टैग्स कहते हैं। बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, जब एस्काई फॉर्मेट की बात करते हैं तो इस तरह से आता है, स्ट्रेट जाना है, ठीक है, स्ट्रेट। ओके सो हियर यहाँ पे हमने टैग लगाया, ओपन किया टैग मिशन नेम, टैग क्लोज किया, फिर हमने कॉमा, अगला डेटा क्या है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्न, मिशन टाइम, तो हमने टैग लगाया, मिशन टाइम लिखा और फिर टैग क्लोज किया, फिर यहाँ पे Altitude. एल्टीट्यूड, ऐसे करके जो भी डेटा मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको टेलीफॉर्मेट में, वो सारा ऐसे लिखा होगा। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में रन हो रही हुई, तो नीचे आप देख पा रहे हैं आपका, आपने ऐसा प्रोग्रामिंग में रन किया, ऐसा आपने प्रोग्रामिंग में रन किया, और यहाँ पे नीचे आपको देखिए आउटपुट आ गया, ठीक है ना, क्या है आउटपुट, कैन एनीबॉडी रीड इट? यस सर, कैन आई? यस यस DSR SLV 2026-001, 105, 298.56, 815.24, 20.18, 9.12, 08056, plus 42.236, minus 41.359, 302.12, 8, 3, 92, minus 91, 2, 0. Data rate of packets will be sent in continuous mode. Student, just give me a 1 to 2 minutes, okay? Just I'll just get it back. Okay. Okay, sir. Yes, scholars, can you hear me? Yes, sir. Yes, perfect. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so यहाँ पे whatever the things you are getting, so actually in background your programming will be something like that. Tags will be used inside that, whatever the thing, like if I go to back, you can see here now. See that what are the things has been written in the like first column, tag mission name, tag mission time, tag altitude, pressure, right? Isn't it? Right. So that will be coming like this, and then your example frame will be something like this. DSR SLV 2026. What is 001? Guys, can you tell me? Look at the data and tell me what is 001.
Sir, 001 is mission time. Very good. It's just for example, okay? Not like don't consider as time, just for example. What is okay? Tell me what is plus 42.236. Let me ask someone. Ayush, can you hear me? Ayush? Ayush? Ayush, can you hear me? Ayush Pandey, can you hear me? Yes, sir. Okay, tell me what is plus 42.236. Your voice is not clear. Huh? Your voice is not clear. You are saying same reason, Ayush. I don't know. My voice is clear to everyone, right, guys? Yes, sir. Yes, sir. Then tell me. For Sir, everyone, but okay. mic of Pravesh is on. Okay. Pravesh, can you hear me? Pravesh. Yes, sir. Yes. Tell me what is plus 42.236. Sir, can I? No. Just let me ask other. Garvit, Yes, sir. what is plus 42.236? 1 minute. Sir, GPS latitude. Is it GPS latitude, guys? Is it correct? Yes. Yes, sir. What is that? Amrit, is it clear? Is it correct? Yes, sir. Yes. Perfect. So this is what the like how this data output you will get on the screen. Sir. Okay. Yes. सर सैटेलाइट में ओनली HTML और CSS प्रोग्रामिंग ही होती है. See, don't make like the thing is confused with this HTML CSS. I did not say we are using HTML CSS. Who said to use HTML CSS used in the satellite? Did नहीं I said? सर I did not ये say. I did not say that. Did I use that word or sentence that HTML and CSS used in satellite? Anyone? I did not use that. I said that just I took the example in HTML. You use these kind of arrows, right? This less than and greater than that you call as a tag. Programming Okay, language sir. is that called as a tag. For that only I said that. Okay. So HTML and CSS, HTML is only to creating a web page. It is nothing related to that. And even CSS to give the dynamics. Like you see in that website, some website, color is coming, like blinking, and text is moving. That is called dynamic. So CSS basically is for dynamics. But when we talk about this satellites and at all, you basically require something called Python. Okay, Python language. So, and even some of the things C++ will be used, but that is the olden days language. But still, C and C++ is the powerful language, So you can learn some kind of language as you are in a school. You should learn. You must learn. Like especially Python, you can learn. Okay, Python will help you in many of the many of the places. Okay, so this is just for example. Okay, don't think that HTML can be used for launching a satellite. No, HTML is totally different. HTML is only to create a page, web page, right? It's not it's not a HTML is not a kind of programming language. You can say it's just a like creating a page and something website, something like that. Okay. It is for creating a web pages. Yes. Now web page is nothing related to launching satellite. So if you want to do so much of dynamics now, like launching satellite is so much of it is involved so much of dynamics, right? Like see just for tell me how many of you seen the clap bulb? Like when you clap, bulb will glow. When you again like clap, it will off. Like that project you have seen, right? Or maybe alarm, right? When the fire happens, so fire alarm, right? It will be that kind of thing, isn't it? Yes or no? If you participate in the science competitions, you might find out these kind of projects. Or maybe line follower rover means I'll just take a white paper, fully white paper over to that. I'll put the black color strip.
So the rover will follow that black color strip only, the line follower robot. So how it is happening? So background some programming is running behind of it. Okay. So their HTML is not used. Basically C and C++ will be used. Okay. So that is, or nowadays C and C++ is replaced actually by Python, because C and C++, if you want to write one code, it will take very big code will come for the same, but Python, it is very small. So that is the thing, because nowadays libraries are available. You can use the available library and you can solve it. So that is the thing. So this is what the ASCII format, and this is how on your screen only this thing will come. You can see the example frame, right? What is written in the tag, that will be in background. Okay. What you can see on the screen, only what how it is written on the example frame. DSR SLB 2026-001-105, something like that. So you should know what is that order is. Okay, is it clear? So data rate of Yes, sir. packets will be sent in So this data, you know what will happen? Because you know that every second pressure will change, right? See, as the rocket go ahead, what will happen? Pressure keep on changing, right? Every second, isn't it? Like 9 o'clock, if it is launched, 9 o'clock, 1 second, the temperature will be different. 9 o'clock, 2 second, temperature will be different. Right? 9 o'clock, 3 second, temperature will be different. 9 o'clock, 4 second, temperature will change, right? Isn't it? You know that as height increases, first temperature is decreasing, then constant, then increasing like that, right? So what will happen? Whatever the data you will get for each and every second. So it is a continuous data. Is it clear? Like at 9 o'clock, 1 minute, what was the temperature? 9 o'clock, 1 minute, 1 second, what was the temperature? 9 o'clock, 1 minute, 2 second, what was the temperature? So like that, you will get all the data till your mission like not get successful until you want the data, till the moment you want the data. Is it clear? So you will be getting a packets of data, continuous data. Is it clear to everyone? Yes, sir. Perfect. Okay. So that is about your telemetry format. So I hope that you have understood. So student, please note down the problems which you have to practice. So now what you have to do? So, okay, let's conclude what we have learned so far. Then I'll be going to the orbits. Okay. So what we have learned so far today? I started today's class. What we have learned? From where I started? Anyone? Guys? Guys, please speak up. Anyone? Sir, I am request you to please speak in Hindi. Hindi? Okay. Actually, कुछ बच्चे हैं they'll not be comfortable with Hindi. Okay. I'll do mixtion. Okay. Yes. तो यस, हमने आज क्या मतलब कि मैंने क्या स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं. तो कौन बच्चा बोलेगा? मेरा वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को? यस सही हो, वॉइस क्लियर, आपकी आवाज सही है. मेरा आवाज ठीक आ रहा है. आयुष, आई थिंक, आई डोंट नो, लग रहा है नेटवर्क को कुछ नेटवर्क हैविंग. आपका नेटवर्क नहीं चाहता कि आप मेरी आवाज सुने? आयुष, ऐसा तो नहीं है? आयुष? यस सर. हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है? रुक रुक कर आ रही है. क्या आ रही है? आप एक बार अपना नेटवर्क देख लीजिए आयुष, नहीं तो दूसरे नेटवर्क से आप ज्वाइन करिए एक बार, बिकॉज मेरा आवाज सभी को क्लियर आ रहा है. Yes, sir. Sir, can you repeat once again? मैंने कुछ बोला ही नहीं. ओके. सो अच्छा, मेरे को आप बताइए बच्चों लोग कि मैंने अभी तक क्या, आपने मैंने अभी तक क्या सीखा. अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया उसके बाद. सर यस सर, अभी हमने सीखा कि पेलोड टेलीमेट्री फ्रंट के बारे में हमने सीखा. मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार होती है, जैसे कि स्पेस से मतलब जो सैटेलाइट्स होती हैं वो 400 किलोमीटर यानी कि 400 किलोमीटर ऊपर होती है, ठीक है, ओशन से. तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो आता है पेलोड टेलीमेट्री फ्रंट में, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो है मिशन नेम, मिशन टाइम, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड और प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, जीपीएस टाइम, जीपीएस लैटिट्यूड, जीपीएस लॉन्गिट्यूड और जीपीएस एल्टीट्यूड और जीपीएस सेट्स एंड tilt X and tilt Y, tilt Z, and software state and camera state.
और आपने बताया कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, जिससे कि हम जो अपने सैटेलाइट की जो कोडिंग है उसे कर सकते हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन को हम मतलब इनपुट करने के बाद हमें आउटपुट मिल सकता है, जैसे कि मिशन नेम, मिशन टाइम, एल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज वगैरह। राइट। तो इसके अलावा भी आपके बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर, आप और भी कई सारे मतलब कि डेटा को ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स जस्ट दिए आपको, ठीक है। ओके, गुड। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो लेट्स डू इट। So you can write these questions or you can take the screenshots and you can submit to your respective teachers. Okay. So I'll get it from them this. Okay. So what is satellite and its types? List out different applications of satellite. Discuss in brief about satellite systems. Okay. Please note down and you can take the screenshot. I have noted. नहीं पड़ेगा। Manisha, my voice is audible. Yes, sir. Okay, perfect. Hijba, my voice is audible. Yes, sir. Okay, perfect. Done, guys? Done, sir. Yes. Shall I go to the next one? Yes, sir. Okay. Yes, please write down this. सर आई हैव अ क्वेश्चन। क्या मैं Yes, पूछिए सर पूछिए पूछिए। जैसे सर आपने बताया कि जो जायरोस्कोप होता है उसका वर्क होता है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो कितना टिल्ट हो रही है, मतलब कितना झुकी हुई है, ठीक है। हाँ तो सर इसी तरह से जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भी इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसे कि हम कहते हैं अल्टीमीटर। तो सर हाँ, इन दोनों का फंक्शन एक ही है, तो सर इसे हम सैटेलाइट में इंस्टॉल नहीं कर सकते? देखिए अल्टीमीटर, पता है आपको अल्टीमीटर क्या करता है? अल्टीमीटर हाइट बताता है। अल्टीमीटर इज द पर्पस ऑफ अल्टीमीटर इज हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर और जायरोस्कोप टोटली डिफरेंट है। अल्टीमीटर क्या करता है? वर्टिकल हाइट बताता है, एल्टीट्यूड बताता है, ठीक है। एल्टीमीटर और एल्टीट्यूड दोनों एक जैसा है, ठीक है। बट आपका जो जाइरोस्कोप है वो क्या करता है? एंगुलर ओरिएंटेशन पर, मतलब कि जहाज सीधा जा रहा है, वो झुक गया तो पैसेंजर को परेशानी होगी कि नहीं होगी? अगर जहाज थोड़ा सा झुका, पैसेंजर को प्रॉब्लम होगी, राइट। अगर वो एक्स एक्सिस से झुकता है, या वाई से झुकता है, या जेड से जी से झुकता है, तो पैसेंजर को परेशानी होगी। तो क्या होगा? उसे वापस आना होगा जितना वो झुका है। जैसे मान लो 10 डिग्री झुक गया, तो उसे क्या होगा? 10 डिग्री आपको वापस लाना पड़ेगा ना। तो हाँ एक्चुअली जी। अब जब हम ड्रोन की बात करेंगे ना, उसमें ऐसा होता है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? अगर मान लीजिए आपका ड्रोन और हवाई जहाज मान लिया 10 डिग्री झुक गया एक्स एक्सिस से, तो उसको -10 डिग्री वापस लाना पड़ेगा। तो जायरोस्कोप वही करता है। अगर जायरोस्कोप चेकिंग करता है आपका, मतलब कि स्ट्रेट है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है। अब ये अनस्टेबल हो जाएगा जब अगर झुका, एक्स एक्सिस से 10 डिग्री झुका, मतलब जायरोस्कोप में सिग्नल जाएगा, मतलब कि हमारा जो ड्रोन है या हवाई जहाज है वो 10 डिग्री झुक गया है एक्स एक्सिस से, इसको वापस लाना है। तो जायरोस्कोप सिग्नल देगा, इसको वापस -10 डिग्री उल्टी दिशा में घुमाओ, तो क्या हो जाएगा? फिर से वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो जायरोस्कोप एंगुलर पोजीशन को वो करता है, ठीक है। और अल्टीमीटर क्या होता है? वर्टिकल हाइट बताता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। प्लीज गाइस राइट डाउन दिस अनदर क्वेश्चन। I have noted. ओके, ये मैंने शायद आपको स्पेस डेब्रिस नहीं पढ़ाया मैंने आपको। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, स्पेस डेब्रिस। ओके okay, done. Have you written these two questions, guys?
What do you mean by space debris? Suggest your own idea if you have any, that how we can Yes, sir. overcome to the space debris problem. Okay. So you can search it. We'll be talking shortly about space debris. You can just from your side, you can have the research. Okay. And you have to write the expansion, full form of all this. Okay. Shall I go Okay, to sir. next slide, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Take this one also. So you have the pictures here. You have to tell in the answer in which picture what is the payload. Like in the first picture, what is the payload? In the second picture, what is the payload? In the third picture, what is the payload? In the case of bus, what is the payload? That is what you have. Okay? So you have to write. Is Okay, it sir. clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Shall I go to next? Yes, sir. Yes. Okay. Now, match the following. Here आपको match करना है. ये मैंने आपको बताया था. Number of name of the planet है और number of natural satellite. Like Earth, how many natural satellite Earth have? How many? Sir, Earth have only one One. satellite. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अर्थ का चौथे के साथ मैच होगा 1. यहाँ पे लिखना है 1. ठीक है ना? इस तरह से आपको. One. तो आप अगर प्रीवियस Correct. सेशन देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा. राइट? ठीक है. Okay, Yes. sir. Shall I go to next? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. Match the following again. अब यहाँ पे name of the planet, ये name of the satellite है. Just a minute. Just a minute. There is a small mistake. Name of the satellite. Type. Okay, type of satellite. Yes. Sir, can you please back the screen? And here it is Mars. Satellite. SAT satellite. Okay. Okay. Can you see the screen, guys? What is there on your screen? The satellite and Mini their mass. satellite less than 100 grams. Satellite mass and sir. Sir, Okay, please so back the screen. just a minute. Mini satellite, Yes. micro satellite. Done. Yes, sir. Thank you. Okay. So here also you have to do the match the following. आपको match the following करना है. मिनी सैटेलाइट का भार के आधार पे. तो आपको ये मैंने भी बताया था, right? Isn't it? So these all are what your what kind of satellites these are? Can you tell me what is the name of these all satellites? Mini, micro, nano, cube, pico, femto. These all satellite comes under Mini satellite. mini satellite. I told you there are 3 types of satellite based on mass. भार के आधार पे 3 तरह की होती हैं. Large satellite, medium satellite, small satellite. So these ये सारी जो satellite यहाँ पे mention है, these all comes under which satellite? Which type of satellite? Guys, 3 types of satellite. small satellite. Okay, these all comes under small satellite, like less than 500 kg, right? So yes. Yeah. Okay, so done. Have you taken this photo of it, guys? Yeah. Okay. Shall I go next? Yes, sir, sure. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, so student, I wish that you have done all the previous. So ये आपका homework है. ठीक है. तो ये actually मेरे को ये जो अब टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कल के सेशन में करना था. मैं आज कर दे रहा हूँ. तो कल के सेशन में हम सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे. ठीक है ना. सॉफ्टवेयर में सैटेलाइट का जो फ्रेम होता है ना वो बनाएंगे. ठीक है. और उसका एनालिसिस करेंगे कल के सेशन में. ठीक है. तो आज हम इसको थ्योरी वाला पार्ट खत्म कर लेते. तो अब हम आप ये होमवर्क कर लीजिएगा एंड यू हैव टू सबमिट टू योर कंसर्न टीचर. ओके. Like from the school, Okay, SDM sir. school, you can submit to your concerned teacher like Mahima ma'am. Who have done, you can do on a like A4 sheet, like assignment something. So remember, you are attending these workshops, so there are some advantage. I hope that everything have been shared. मतलब आपको बता दिया होगा इस workshop के क्या benefits हैं. Did it have been told to you or not, guys? What are the benefits of this workshop? Who all are attending? आपको क्या फायदे हैं इस workshop के?
Do you know? सर Yes. सर Yes. Sir, we Yes. got knowledge. कहते हैं कि हम भविष्य में चल करके हमें सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के बारे में एक तो नॉलेज मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि हमें इसरो और नासा के लिए इससे थोड़ी हेल्प हेल्प मिलेगी। Okay. What kind of help? Okay. मैं बता दूं आपको। अगर आप पोस्टर देखिएगा, आपको पोस्टर शेयर किया होगा, राइट? उसमें पढ़िएगा, लिखा हुआ है। So two are very important thing. One is जो बच्चे टॉप होंगे, नंबर्स मैं नहीं बता सकता, आई कैन नॉट tell the numbers, but the student who will be really bright and doing really well, they will be getting a chance for a trip to ISRO. It's in Andhra Pradesh, Nellore, Sriharikota, from where your satellite used to be launched. I told you, you will be getting a chance for a trip to ISRO. Okay, select a student, and you will be going to see, you will be you will, let me complete. So you will be getting a Sir, chance to have a trip, and you will be seeing the launch pad from the very close, and whatever the facilities are there over there, you'll be getting the chance to see that. So that is the first thing. Second thing, we have an upcoming project in our organization, Antariksha India, and that is something DSR SLV 2026. So 2026 we are going to do something very big. So we are like something like we are planning to launch our own satellites. Okay, so something related to that event. So you will be you will be getting a responsibility for that project, like as a what is it, chief technical officer, something like that, for that project. Okay, so who will be doing this? So these are the two big things which you'll be getting via this workshop. Okay, and apart from that, as you mentioned, you'll be getting a knowledge and at all. So that is the thing. So please be active, attend all the sessions, and best of luck for you. Okay, so that is the thing, right? Yes, सर इसका एग्जाम भी होगा? yes, of course you will be having exam at the last of the session. Will not select, like, Okay, we'll sir. be conducting exam, and how is your attendance, how you are performing, how you are active in the class, you are answering the questions or not, you are interacting or not, many things are there, right? Everything is सर ये सेशन कब तक के लिए? yes, yes, Amrit. सर ये सेशन कब तक चलेंगी? So it is a 2 week, like actually we have to wind up like by 6th. So today is like 30th, right? So it Yes. is 2 week workshop, but by 6th May we have to finish it. Okay, so Okay. so we'll be giving you some kind of certificate also, 2 weeks workshop certificate. You have done that, so that one also. So there's another benefit. So but the two main benefits is you will be getting a trip. Okay, and another thing is you will be getting a chance to work on this project. So there you'll be working on the rocket, real rocket from your hand. You will be doing and satellite and at all. Okay, so that is the thing. Okay, Sir, yes, Hisba. so I'm asking that before also I am in Jaipur, so Andhra Pradesh is really far from there. So we will get on our own. We have to go Andhra Pradesh. Then you will take, or from your side we will come to Andhra Pradesh. So No, what's from our that? side only you will come. So but thing is like see the thing is you have to come. Whatever the way you have to come. Will like you have to travel and you have to come to that particular place, like where you'll be saying in Andhra Pradesh, where you have to. So where there will meet, and then we'll be taking to you inside and at all. That is what will happen, isn't it? Okay, okay. Right. And the remaining thing later will be discussed. Okay. So that is the thing. So please Okay, do well. Okay. Right. Fine. sure. Shall I go to next, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let me ask you. So homework, please do it and submit. Who are from the SVM school can submit to the concerned teacher, like my ma'am, and who are like from my side have joined, they can submit to me. Okay, whatever the till so far homework I have given. Okay, right. Okay, sir. Okay, now. So in like now this is tomorrow's session, but today I'll discuss. So now I'll be talking about orbits. Okay. So anybody have idea what do you mean by orbits? एक वो चॉकलेट आती थी ऐसी खाओ तो उसे ठंडा लगता था मुंह में, वो ऑर्बिट होता है ना, किसने किसने खाई है? राउंड होता है वैसा, फिंगर टाइप्स में, राइट? राउंड रहता है, उसके अंदर भी राउंड रहता है, खाते हैं तो कूल कूल सर। ऑर्बिट ऑर्बिट इज दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट मीन्स चॉकलेट, राइट? Sir? No, Yes. sir, sir.
You can raise. You can. Orbit Guys, you is can. Guys, you can raise your hand. I'll call your name, then you can answer. Right? So Amrit. Yes, Amrit, tell me. सर ऑर्बिट उसे कहा जाता है जैसे कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर स्पेस शटल जब अर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो फिर जैसे एग्जांपल के किसी सैटेलाइट को ले लेते हैं तो वो अर्थ के ऑर्बिट में अमृत, आपका आवाज बहुत धीमे आ रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, आप थोड़ा क्लोज है। एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल के लिए can I? Ismail, let सर complete मतलब that. I'll call. You don't need to say can I, can I. I'll call. Okay, no worries. I'll call everybody's name who will raise the hand. Okay. Yes, Amrit, go ahead. तो एग्जाम्पल के लिए हम अभी एक सैटेलाइट को ले लेते हैं, तो जब वो सैटेलाइट को हम लॉन्च कर देंगे तो वो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो सर जो अर्थ का ऑर्बिट होता है सर वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, और जो अर्थ की ग्रेविटी होगी वो उसे उसी ऑर्बिट में मेंटेन रखेगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट। आप ऑर्बिट वर्ड यूज कर रहे हो ना, अर्थ का ऑर्बिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट, आई एम आस्किंग। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑर्बिट? ओके, हिजबा। यस, हिजबा। Yes, sir. So orbit is like an object which Orbit which is like an repeat object. regularly. Orbit is like an So object. first I have no like it is like orbit regularly and repeat the path. There is a path where orbit regularly repeat the one that chapter around the object. ये उस ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाता है। An orbit is then an object is an orbit. ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है। ओके, जैसे सन के चारों और अर्थ और 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो पाथ पर वो चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट बोलता है। ओके, गर्वित। So the orbit is a circular path in which गूगल डेफिनेशन, object गूगल डेफिनेशन। हाँ गर्वित, मेरे को आपकी अपनी परिभाषा चाहिए, मेरे को गूगल की परिभाषा नहीं चाहिए। Sir, it is not Google. हाँ, Sir, हम then हिंदी में ओके, ठीक बोले। है, गो अहेड। ऑर्बिट है ना, एक सर्कुलर पाथ होता है या फिर एक पाथ होता है जिसमें जो अपनी सैटेलाइट होती है ना, वो अपने अर्थ के चारों तरफ जो जिस पाथ में घूमती है, या फिर जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जिस पाथ में घूमती है, उस जो पाथ है उससे ऑर्बिट कहते हैं। ओके, गुड। एनीवन एल्स वांट टू आंसर? Zahida, you raise your hand and then unraise. You want to answer? Your voice? Sir, like which planet has a definite path, like Earth has a definite path where it revolves around the sun. So that is orbit. Okay, so देखिए, ऑर्बिट क्या होता है? एक पाथ है आपका, ठीक है ना। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ पाथ, इट इज अ वे। ओके, विच ओके, सो ऑर्बिट क्या है? आपका एक पाथ है जिसको क्या करता है? सैटेलाइट फॉलो करता है कि जहां जहां रास्ता जाएगा वहां वहां सैटेलाइट जाएगी। तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका जो ऑर्बिट है? इट इज अ पाथ फॉर एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ वे फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। स्पेस में आप जो सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो सैटेलाइट किसी रास्ते को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? किसी पाथ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? तो द पाथ विच सैटेलाइट फॉलो, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ओके, in orbit, in order to revolve around the planet or sun, the path which satellite follow is called as orbit. So orbit is nothing but एक रास्ता है जिसको सैटेलाइट फॉलो करती है, ठीक है ना, और उसको फॉलो करते करते चक्कर लगाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज ऑर्बिट? यस सर। अब देखिए, ऑर्बिट आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो सर्कुलर हो सकता है, ठीक है, और एक होता है अंडाकार का, लाइक इलिप्स बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट। दो तरह के ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट और एक इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज नथिंग बट इट इज अ पाथ जिसको विच लाइक इट इज अ पाथ विच दैट सैटेलाइट फॉलोज, राइट, along with satellites move around,
ठीक है। और सैटेलाइट जो पाथ जो आपके ऑर्बिट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, शेप के आधार पे, आपके ऊंचाई के आधार पे भी होते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई के आधार पे बेस्ड ऑन द हाइट, ओके, बेस्ड ऑन द हाउ मच एल्टीट्यूड इट इज, you can classify the orbits, and based on the like size, like it is in circular shape so it is called circular orbit, if it is in elliptical shape it is called elliptical orbit, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हम। Okay, so can anyone say what do you mean by orbit? Any idea? So we have done this. Okay, next, let me go next slide. So ma'am, orbit is nothing but its path, as that Hijba and Garvit has said. Okay, so what is orbit? Orbit is nothing but it's a path. So now you can see here the definition. You can see the picture, guys. Elliptical orbit, right? So here you have like Yes, what? sir. You can see something called perihelion and aphelion. Can you see that, guys? In the first picture, something is written Yes, orbit, sir. yellow color, and what is that planet? Can you tell me? In the first picture, what is that planet? Can you identify by looking at it? Yes, sir. Jupiter, Jupiter. Yes, sir. Very Jupiter. good. It's a Jupiter. Okay. You will be having brown color strips on that. Okay, so it's Jupiter. Now here you can see something is written perihelion and aphelion. You know what is perihelion and aphelion? Anyone? I already actually discussed. If you remember perigee and Sir. apogee. Did you remember? Sir. It is something related to that. Did you remember what is perigee and apogee, guys? Anyone? Yes, Hijiba. हिजबा आपका हैंड रेज है, बोलिए। व्हाट इज पेरिजी, व्हाट इज अपोजी? ओके फाइन। सो हियर सर। चलिए, तो मैंने सर। आपको बताया। यस गर्वित। सर क्या ना? यस ओके, let me explain. ओके, सो आपके ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? साइज के आधार पे उसका जो शेप होता है दो प्रकार के, सर्कुलर एंड इलेप्टिकल, ठीक है। और एक और होता है इंक्लाइन भी होता है। कौन सा होता है? इंक्लाइन, मतलब जो झुका हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पाथ फॉलोड बाय अ सेलेस्टियल बॉडी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट एज इट रिवॉल्व्स अराउंड अनदर बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो पाथ क्या है, मतलब कि ऑर्बिट क्या है? सैटेलाइट, मतलब कि पाथ फॉलोड है। सैटेलाइट जो सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब कि जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा है, इसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इट एज इट रिवॉल्व, जैसे कि ये किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। ऑर्बिट्स आर नियरली इलेप्टिकल और सर्कुलर इन शेप, ठीक है ना। तो ऑर्बिट का शेप क्या होता है? शेप के आधार पर ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर, इलिप्टिकल। ठीक है, सर्कुलर है इलिप्टिकल। So circular will be mean like a circle and elliptical means अंडाकार, like how you can see in the picture, ठीक है। अभी हम पेरीहिलियन और अपीलियन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन द शेप एंड वेरी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड बाय अ केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो आपके कुछ केप्लर्स लॉ होते हैं, केप्लर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ऐसा करके, ठीक है। तो वो हमारे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस होते हैं। Now, an orbit is a regular repeating path that one object in space takes around another one, and also orbits come in different shapes. तो ऑर्बिट तो पता चल गया आपको क्या होता है, एक तरह का पाथ है, रास्ता है जिसको कोई सेलेस्टियल बॉडी या सैटेलाइट फॉलो करती है किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाने के लिए, राइट। जैसे कि अर्थ का अपना, धरती का अपना एक पाथ है जिसको फॉलो करती है, सूरज का चक्कर लगाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे जो ऑर्बिट है आपका, ठीक है, वो कितने प्रकार का हो सकता है? डिफरेंट शेप के आधार पे, सर्कुलर, इलिप्टिकल, इंक्लाइन, इंक्लाइन। ठीक है। तो सर्कुलर ऐसे होगा आपका, ठीक है। इलेप्टिकल कैसे होगा? इलेप्टिकल ऐसे होगा। और एक सेंटर पे आपका सन, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे पास केप्लर्स लॉ में बोलता है एक दो फोकस होते हैं, एक फोकस पे हमारा सन होता है और फिर दूसरा प्लेनेट चक्कर लगाता है। और इंक्लाइन क्या होगा? यही इलेप्टिकल वाला कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कि हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना रहा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, मतलब 30 डिग्री, मतलब कि ऐसे झुका हुआ है आपका प्लेन, ठीक है। तो तीन तरह के हो गए शेप के आधार पे। ऑर्बिट कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, सर्कुलर, इलेप्टिकल एंड इंक्लाइन, ठीक है। चलिए आगे चलते।
अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट अब बात करते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हम बात करेंगे ये हाइट के आधार पे होंगे, ठीक है? किसके आधार पे? अभी जो हमने बात किया वो किसके आधार पे? शेप के आधार पे। सर्कुलर हो गया, इलेप्टिकल हो गया, तीसरा क्या हो गया? ओरिएंटेशन, मतलब इंक्लाइंड है, कुछ एंगल पे है वो, तो आपका क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड ऑर्बिट। अब ये जो यहाँ पे लिखे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, ये क्या है? देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिसाइड व्हिच ऑर्बिट वुड बी बेस्ट फॉर द सेट। अब यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑर्बिट्स लिखे हैं। कितने लिखे हैं बच्चों? 4। लियो, चार। मियो, जियो, हियो, ऐसे याद कर सकते हैं आप। लियो, मियो, जियो, हियो। लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, and इसको sometimes also we call as geosynchronous orbit. What we call as? Sometimes we also call as geosynchronous orbit. ठीक सर। CHRONOUS। ये जो आपका जियो स्टेशनरी है ना, इसको हम समटाइम जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस, हम देखेंगे, बट अभी के लिए लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, मियो, जियो, हियो, ठीक है? क्लियर है सभी को? याद रहेगा बच्चों? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, यस। there are many factors that decide which orbit would be best for the satellite. So अब देखिए, जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो आपको किस ऑर्बिट में लॉन्च करना है? which orbit, in which orbit satellite you will launch? So it's it that you have to decide which orbit will be the best. Leo will be the best, Mio will be the best, Geo will be the best, or Hio will be the best. Just for example, if I talk about, suppose your this what do you call this weather forecasting, मतलब कि मौसम की जानकारी। सो मौसम की जानकारी में सैटेलाइट जनरली क्या करेगी बताइए? वेदर फॉरकास्टिंग में जो मौसम की हमें, मतलब कि सैटेलाइट जो हमें इन्फॉर्मेशन है, उसमें हम क्या करेंगे जनरली? कोई बताएगा बच्चा? जो मौसम से रिलेटेड वेदर फॉरकास्टिंग की जो सैटेलाइट है, वेदर से रिलेटेड होती है सैटेलाइट, उसमें सैटेलाइट जनरली क्या करेगा? एनीवन? व्हाट सैटेलाइट विल डू जनरली? एनीवन? व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट विल कलेक्ट इफ इट इज वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट? वेदर डेटा। जैसे कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, व्हाट इट विल डू? यस सर। और फ्लड आ गया, व्हाट इट विल डू? It will capture the pictures, right? Isn't it? यस सर। Now tell me, यस। अगर आपकी सैटेलाइट का मेन एप्लीकेशन है पिक्चर्स को कैप्चर करना, तो आप बताइए आप सैटेलाइट को दूर लॉन्च करेंगे या पास में लॉन्च करेंगे? धरती के पास सरफेस में। के दूर करेंगे? अच्छा, आपको मुझसे पास में। पिक्चर खींचना है, आपको पिक्चर खींचना है, फोटो खींचना है, तो पास से ज्यादा क्लियर आएगी, दूर से ज्यादा क्लियर आएगी? पास से। पास। तो बेस्ड ऑन एयर पे, सो आपकी जो पिक्चर कैप्चर करने वाली है वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट, उनको कहाँ लॉन्च किया जाता है पता है आपको? लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट। अभी हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कि आपका एल्टीट्यूड काफी कम होता है, मतलब कि जैसे आपका 400 किलोमीटर है ना, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो किसमें है, किस ऑर्बिट में है वो? लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है? ओके। वैसे ही आपका मीडियम होता है, जियो होता है ना, हाई जियो होता है। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज दिस लियो, मियो, जियो। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चों? यस सर। इफ एनीबॉडी इज आस्किंग सर। एनीथिंग, हाँ बोलिए। Yes, sir. Sir, I studied at the NASA James Webb Space Telescope was launched in L2 orbit. What was that? गर्वित, आप अभी मेरे को ये कंप्लीट तो करने दीजिए पहले। लियो, मियो, जियो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट यू कैन आस्क लास्ट। ओके, पूछ रहा था कि इसमें 4 टाइप के होते हैं, L2 भी था कुछ। that is different, that is a newly now that telescope has launched recently. So see, the thing is, Yes, sir. these are the main orbits. That is the different satellite that scientist has given the name. If you go beyond the limit, like we have the maximum is Hio. If you go beyond the limit, scientists will give the names that are just names. Okay. Okay, sir. Okay. Now let me go to the next. So here. So student, what are the different types of orbit? Anyone? Please raise your hand. What are the different types of orbits? Who want to answer? Raise your hand, guys. Different types of orbits. Only 2%. There are 3 types of orbit. Just raise your hand, guys, who want to answer. Different types of orbits. Who want to answer? Only 3 people. What about remaining? Remaining are sleeping in the class, not answering. Okay, Amrit, tell me. So 3 types of orbit: circular and elliptical and inclined.
Okay. What about Geo, Meo, Heo? There is also types of orbits, right? Yes. Then, so आपको ऐसे बोलना है. Types of satellite can be categorized in two. One is based on size and their orientation, and another one is based on what? Based on height. Okay, so based on size and orientation, we have three. What is that? Circular, elliptical, and inclined. And based on Inclined. height, we have four. Leo, Meo, Geo, Heo. ठीक है? Heo. तो जो लियो Yes, मियो sir. जियो हियो है, ये हाइट के आधार पे है. कितनी हाइट पे है तो उसी हिसाब से हम नाम देते हैं. ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्बिट्स आर लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट. Yes, sir. ये आपका हाइट के आधार पे. Okay, now let's talk about. We'll stop here. Okay, we'll talk about Leo. Shall I talk all the orbits or shall I stop? Guys, tell me what you're saying. So talk all orbit. What about others, guys? What do you say, guys? Okay, I will talk about low Earth orbit and then I'll stop. Okay. So low Earth orbit क्या है? Leo means low Earth orbit is as the name suggests an orbit that is relatively close to the Earth surface. मतलब कि ऐसा orbit जो Earth के surface के पास काफी close है. So low Earth orbit starts from 160 किलोमीटर to 1500 किलोमीटर एल्टीट्यूड. मतलब कि 160 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट किस कैटेगरी में आएगी? कौन से ऑर्बिट में होगी? लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है? तो 160 किलोमीटर से लेके 15. ये नंबर थोड़ा सा वेरी आप कर सकते हो. याद करने के लिए आप 160 की जगह 150 भी ले सकते हो, तो आपको याद रहेगा. 150 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक अगर लॉन्च करते हैं तो कौन से ऑर्बिट में करेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट. अब देखिए, सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 7.8 किलोमीटर पर सेकंड. मतलब कि अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करें तो सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी अप्रोक्सीमेट? एक सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? 7.8 किलोमीटर. ठीक है? तो अगर आप क्योंकि पास में हो ना तो आपका तेजी से जाएगा. नाउ एट दिस स्पीड, तो पता है सैटेलाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स टू कंप्लीट सिंगल रोटेशन. समझ रहे हो आप? मतलब कि 90 मिनट्स लेगा इसको सिंगल रोटेशन, मतलब कि अराउंड द सन. मतलब कि एक पूरा इसको कंप्लीट करने के लिए, राइट? कितना टाइम लेगा? 90 मिनट्स. 90 मिनट. मतलब कि एक पूरा चक्कर, चारों तरफ चक्कर लगाने में आप उसको 90 मिनट, मतलब कि ऐसे करके कितने चक्कर लगा लेगी सैटेलाइट? बहुत सारे चक्कर लगा लेगी, राइट? एक दिन में. ऐसा नो, जैसे कि Yes. धरती क्या करती है? मतलब कि आप मान लीजिए इसका धरती क्या होता है, मतलब पूरा एक एक चक्कर लगाने में सूरज का कितना टाइम लगता है? 365 डेज. पर यहाँ पे 90 मिनट में ही एक पूरा चक्कर लगा रही है सैटेलाइट, अगर लो अर्थ ऑर्बिट पे आप करें, क्योंकि बहुत पास है तो बहुत तेजी से जाएगी. तो 90 मिनट में एक चक्कर पूरा हो जाता है. तो इस तरह से आप काउंट करिएगा कि कितने चक्कर लगाएगी वो सैटेलाइट एक दिन में. समझ में आ रहा है आपको? So low Earth orbit is good for Earth observing and weather satellite. लो अर्थ ऑर्बिट कौन सी सैटेलाइट के लिए अच्छा है? अर्थ को ऑब्जर्व, मतलब कि अर्थ की पिक्चर्स निकालना, और वेदर सैटेलाइट, मतलब जो वेदर सैटेलाइट होती है, क्योंकि आपको काफी क्लोज से ऑब्जर्व करना होता है. ठीक है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में अगर आप कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, तो लो अर्थ ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च करोगे जिसमें आप काफी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना, वेरी, मतलब कि उसमें आपको क्लोज से करना होगा. जैसे पिक्चर कैप्चर करना है, या वेदर लाइक फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, तो कितना नुकसान हुआ, तो उसको आप उसके लिए आपको सैटेलाइट को कहाँ लॉन्च करना होगा? विच ऑर्बिट यू हैव टू लॉन्च? लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है? लो अर्थ ऑर्बिट लियो. एग्जाम्पल, ISS ट्रेवल अराउंड अर्थ अबाउट 16 टाइम्स अ डे इन लो अर्थ ऑर्बिट. यू नो, आपका जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कितने कितने हाइट पर है? 400 किलोमीटर. तो कौन से ऑर्बिट में आएगा ISS? गाइस, इन विच ऑर्बिट ISS विल कम? Yes, guys. In which orbit ISS will be? Low Earth Low orbit. Earth orbit, because its height is almost 400 किलोमीटर. So ये आ गया ना 150 से 1500 किलोमीटर की. अब देखिए ISS क्या करता है? 16 बार चक्कर लगाता है. किसका? धरती का. एक दिन में. समझ लीजिए कितनी फास्ट जा रहा होगा. ठीक है? अच्छा, अब आपका एक होमवर्क और है, वो जो मैंने दिया है, ये भी ट्राई करिएगा. ठीक है? ये जो ये ISS है, ये 16 बार चक्कर लगा रहा है एक दिन धरती का. तो कितनी स्पीड से जा रहा होगा? कितनी गति से आपका जो ये क्या कहते हैं ISS से घूम रहा है धरती के. जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली क्या होता है?
अभी बताया ना मैंने 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ISS की गति क्या होगी आप निकालिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है? ठीक है बच्चे लोग, Yes, sir. परफेक्ट। तो Yes, चलिए sir. मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगा, ठीक है ना? बाकी का मैं कल के सेशन में बात करूंगा, ठीक है? So that is what for today. Let's conclude the session. So yes, who is coming for the So, sir, conclusion? Yes, बोलिए sir, हिजबा। what you have tell homework last in orbit. मैंने होमवर्क बोला, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में सैटेलाइट कितनी दूरी जाती है? 7.8 किलोमीटर, ठीक है? तो ISS को क्या बोल रहा है? ISS 16 बार जाता है, 16 बार चक्कर लगाता है पृथ्वी का अप्रोक्सीमेट। कितनी बार चक्कर लगाता है धरती का? 16 बार 16 बार एक दिन में। टाइम। तो आपको स्पीड कैलकुलेट करनी कि उस जो ISS जा रहा है कितनी स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है? आपको डिस्टेंस Okay, and इसके लिए हिंट में आपको डिस्टेंस पता है। ISS 400 किलोमीटर होता है ऊंचाई पे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है? सोचिएगा और फिर फाइंड आउट करके बताइएगा कितना स्पीड होगा ISS। okay, sure. Okay, so let's conclude the session. So who is coming forward to say what we have learned today? Yes, guys, what we have learned today? Yes, guys. सर Yes, Amrit. अमृत Yes, sir. सर Yes, आज हमने दोबारा से सीखा एटमॉस्फेरिक लेयर और जिस तरह से हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो किस प्रकार से टेम्परेचर घटता व बढ़ता है ये सीखा। और पेलोड टेलीमेट्री सीखा। और पेलोड के बाद मतलब टेलीमेट्री फ्रंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो सब सीखा। और हमने सीखा कोड वो किस प्रकार से होती है इस बारे में सीखा। और हमने सीखा कि जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वो कितने अर्थ के ऑर्बिट होते हैं। तो अर्थ के जो ऑर्बिट होते हैं वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो ऑर्बिट, जियो और हियो। और ये और तीन टाइप्स के अलग ऑर्बिट होते हैं, वो होते हैं सेलुलर और इलेप्टिकल और इंक्लाइंड। थैंक यू। And sir, yes, Amrit, आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोला आपने? ओके सर, मैं दोबारा बोल देता हूँ। हम्म, सर आज के सेशन में हमने सीखा कि अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर होती है वो yes, उनके मतलब जो बॉर्डर लाइन होती है वो कितनी होती है। और जो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर घटता घटता है बढ़ता है इस बारे में सीखा। और टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर कब घटता है और कब घटता है और कब बढ़ता है ये सीखा। और हमने सीखा पेलोड टेलीमेट्री फ्रंट और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो ये सब सीखा। और हमने सीखा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जिससे कि सैटेलाइट में किस प्रकार से कोडिंग होती है इस बारे में हमें जानकारी मिली। और हमने सीखा कि अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के 3 ऑर्बिट होते हैं, सेलुलर, इलेप्टिकल, इंक्लाइंट। और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है वो है लियो, मियो, जियो एंड हियो। इसको किसके आधार पे बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मतलब डिस्टेंस के हाइट के, आधार एल्टीट्यूड के के आधार। आधार पे, ठीक है? बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड, ठीक है, गुड। हाँ जी। और होमवर्क मैंने क्या दिया, कौन बताएगा? व्हाट वाज द yeah, होमवर्क? sir, yes, sir, I want. Yes, yes, go ahead, Rijba. So first, you have like first you have given an exercise. First question is what is satellite and its type. So we have to find the answer. And the second question is a list of different application of satellite. And third is discuss in brief about satellite systems. Okay. Now after this, you have given next. 1 minute. Yeah. So fourth question is what do you mean by space debris? Suggest your own idea. If we have any, that how we can overcome the space debris problem.
It's a And debris. fifth, Yujba, it's a you have debris. Okay, given it's a space debris. debris. Okay. Okay, so. Yeah. And fifth, you have given what is expressions or the following. A is ADCS, B is EPS, C is OBC, and D is AOC. Okay. And then you have given match the following six question. There is given name of planets and name of natural satellite. Then we have to answer. And after that, last second you have given a name of planets like mini satellites, and the name of number of satellites less than 100 gram, 1.5 kg, and we have to answer. Right. Then last you have given about orbit. We have to answer that ISS is 500 kilometers up, and how many he revolves around the Earth. Okay. So we have to ISS answer का these आपको all स्पीड questions. निकालना है, ठीक है ना? ISS कितनी तेजी से घूम रहा होगा, Yes, ठीक है? sir. ISS का ऊंचाई कितना होता है? 400 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट, ठीक है? अच्छा, एक चीज और ढूंढिएगा कि Yes, sir. जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका भार कितना है, ठीक है? ठीक है, Okay, sir. भारी Okay. है, वो भी आप सर्च करिएगा, कल बताइए एक बार। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आपका tomorrow we'll meet at the same time like as usual 12:45 afternoon. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you sir. Thank you, sir. Good evening. Sir, good evening. Thank you.